so good. Hello and what's up guys, this is Ricky and welcome back to another video and आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ latest OnePlus TVs के बारे में. So on 2nd July OnePlus releases 3 TVs, the U1 series and the Y1 series. U1 सीरीज में उन्होंने एक 55 इंच का टीवी निकाला था एंड Y1 सीरीज में उन्होंने एक 32 इंच और एक 43 इंच का टीवी निकाला था एंड इन तीनों ही टीवीज में कुछ ना कुछ डिफरेंस है एक्सेप्ट देयर साइजेस एंड देयर प्राइसेस. सो लास्ट ईयर OnePlus केम विद देयर Q1 सीरीज एंड उसमें हमें दो टीवीज देखने को मिले थे दैट वर 70,000 रुपीज एंड 1 लाख रुपीज. सो वो प्राइसिंग काफी ज्यादा हाई थी फॉर इंडिया. कोई भी लोग इतने महंगे टीवी नहीं लेते यूजुअली इंडिया में. सो दिस टाइम अराउंड OnePlus केम बैक टू इट्स रूट्स, दैट इज एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ उन्होंने टीवी निकाले हैं एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग काफी ज्यादा अच्छे टीवीज हैं. जो U1 सीरीज का टीवी है दैट इज द 55 इंच टीवी, वो काफी ज्यादा सिमिलर फीचर्स के साथ निकाला है टू Q1 सीरीज बट एट अ वेरी लोअर प्राइस. सो नाउ talking about the build quality of the OnePlus TVs, काफी ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी है इन TVs की एंड ऑब्वियसली होगी भी बिकॉज नाउ OnePlus इज स्विमिंग विद द बिगर शार्क्स. सो फाइनली जो हमें TVs देखने को मिलते हैं वो भी काफी ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी के हैं. तीनों ही टीवी के जो बेजल्स हैं आर प्रीटी थिन. द लोअर बेजल इज अ टैड बिट थिकर बिकॉज वहाँ पे OnePlus की ब्रांडिंग आ जाती है एंड ऑल्सो द हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर देयर इन द बॉटम हाफ ऑफ द टीवी. द ओवरऑल थिकनेस ऑफ ऑल द 3 TVs इज ऑल्सो वेरी लेस, दैट इज 6.9 mm थिकनेस, जो ऑलमोस्ट एक वुडन पेंसिल के जितनी थिक है. लाइक आई एम सीरियसली अमेज्ड टिल डेट कि हाउ डू दे रियली डू दिस, कि ये स्क्रीन इतनी पतली कैसे होती हैं, बट दे आर. जो लोअर 1/3 ऑफ द टीवी है वो स्लाइटली थिकर है देन द रेस्ट ऑफ द टीवी. वो भी इट्स जस्ट लाइक 10 mm. दैट इज बिकॉज जो लोअर हाफ है वहाँ पे हमें सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स देखने को मिल जाते हैं एंड ऑल्सो द स्पीकर्स. सो दैट इज व्हाई इट्स अ लिटिल थिकर. पीछे से भी जो टीवी का डिजाइन है इस काफी मिनिमल एंड काफी नीट एंड जो टीवी के पोर्ट्स भी हैं वो इसी थिकर पार्ट में हैं पीछे और राइट साइड पे हैं एंड इवन दे आर हिडन. वो ओपन नहीं है, दे हैव अ स्लिप ऑन कवर दैट वी कैन थ्रो ऑन सो दैट हमें पोर्ट्स ना दिखे एंड ओवरऑल नीट डिजाइन रहे एंड ऑल्सो द पोर्ट्स डोंट गेट डस्टी. इसके अलावा इन द बॉक्स ऑफ द टीवी हमें रिमोट देखने को मिलता है, कुछ वायर्स देखने को मिलती हैं एंड कम्स विद अ टेबल स्टैंड जो काफी ज्यादा स्टर्डी है एंड हैज अ मेटल डिजाइन आई गेस एंड दैट ऑल्सो लुक्स प्रीटी गुड एंड काफी ज्यादा स्टर्डी होगा. एंड वी कैन ऑल्सो गेट आवर टीवी वॉल माउंटेड. वॉल माउंट हमें बॉक्स के अंदर नहीं देखने को मिलता है. इफ वी ऑर्डर इट फ्रॉम Amazon, we can read it on Amazon. The guy that will come for installation brings the wall mount with himself and it is free of cost. And we can also read the installation guides on the Amazon site itself where we can order the TV. For ports in this TV, we get 3 HDMI ports, 2 USB ports, 1 2.0 port and 1 3.0 port, an Ethernet cable port, 2 RF and AV ports and also a headphone jack. Next moving on to the colors of this TV. काफी ज़्यादा mesmerizing colors हैं इस TV के, काफी ज़्यादा vibrant colors हैं इस TV के and OnePlus boasts a 93% DCI P3 color gamut. That means काफी ज़्यादा wide range of colors हमें देखने को मिल सकते हैं, काफी ज़्यादा amazing colors होंगे इस TV के. The video quality will be crystal clear as it also supports Dolby Vision and also HDR10+ support. Now इस TV के कलर्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं that OnePlus says कि लोग इसे content creation के लिए भी use कर सकते हैं for editing and stuff and also gamers can use this to game. If they want like a bigger screen to game, like I don't suggest bigger screens for gaming because people don't use it usually, but you can use this screen for gaming as well. Now the resolution of all the 3 TVs, that is the Y1 series and the U1 series, is slightly different. The 55-inch TV comes with a 4K resolution, the 43-inch TV comes with a 1080p resolution, and the 32-inch TV comes with a 720p display. Now honestly according to me 720p display in 2020 is not that good thing, but I guess if they have brought this TV out there might be a lot of people who might be thinking of buying a 32-inch TV that is just 720p. Now the most important part is the pricing of these TVs. जो 32-inch वाला TV है that comes at a price of 13,000 rupees. Now that is really less and for a OnePlus TV with premium quality that is literally a really big thing because right now if I go out there I would seriously consider OnePlus TVs because I'm a OnePlus fan honestly myself and अगर 13,000 में हमें एक 32-inch का LED TV मिल सकता है that is also an Android smart TV. So I guess that is a really good thing. जो 43-inch का 1080p display है that is also really good thing and उसका price 23,000 rupees है. So that is the best thing. Like 23,000 में Android smart TV that has a 1080p resolution and a 43-inch size. Now that is some really aggressive pricing. जो 55-inch U1 series 4K डिस्प्ले है उसकी प्राइसिंग इज 50,000 रुपीज एंड इवन दैट कम्स एट अ रियली गुड प्राइस. लाइक इफ यू फाइंड अदर टीवीज जो इस प्राइस में है वो भी हमें सेम ऑलमोस्ट स्पेसिफिकेशंस देंगे एंड द प्राइसेस वुड बी स्लाइटली ऑन द हायर साइड.
50,000 में Android TV 55 inch and 4K resolution के साथ, so that is also a really good pricing for that TV. So next talking about the remote of this TV, काफी ज्यादा sleek and classy remote है इस TV का, काफी neat design है इसके remote का, काफी clicky buttons हैं इसके remote के. It also comes with a dedicated Google Assistant button if you just want to quickly find something in your TV. It also has dedicated Netflix and Amazon Prime buttons जो आपको straight away Netflix and Amazon Prime पे ले जाएंगे, and that saves a lot of time. So that is a really good thing. So overall जो इन TVs का user experience होगा according to me will be really smooth, because obviously OnePlus provides a really great software experience. I use a OnePlus phone myself. The interface of the overall OnePlus phone is really good, and also I'm guessing जो TV का भी experience होगा that will be really smooth. काफी स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस होगा फॉर टीवीज. द टीवी कम्स विद द लेटेस्ट एंड्रॉइड 9, एंड जो नेक्स्ट एंड्रॉइड आएगा टीवी के लिए वो भी आई एम प्रीटी श्योर OnePlus विल ब्रिंग एज सून एज पॉसिबल टू देयर टीवीज. सो टू मेक द एक्सपीरियंस इवन बेटर, हम अपने फोन्स में OnePlus Connect ऐप डाल सकते हैं. नाउ इट ऑल्सो कम्स फॉर iOS यूजर्स, एंड एट अ टाइम हम अपने टीवी से 5 यूजर्स कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट जो पहले झगड़े होते थे घर में रिलेटेड टू टीवी के रिमोट, मेरे को चाहिए, वो अब नहीं होंगे. वी कैन ऑल कंट्रोल द टीवी एट द सेम टाइम, एंड ऑल्सो वी कैन यूज आवर फोन एज अ ट्रैक पैड फॉर द टीवी टू स्क्रॉल इन द टीवी एनीवेयर. हम अपने फोन का कीबोर्ड यूज कर सकते हैं टू टाइप एनीथिंग इन द टीवी. वी कैन ऑल्सो यूज द फोन टू टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन द टीवी. जो OnePlus Connect ऐप का एक्सपीरियंस है वो भी काफी ज्यादा स्मूथ है, एंड ऑल्सो हम अपने टीवी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं थ्रू दैट ऐप, एंड जो स्क्रीनशॉट होगा वो हमारे फोन पे भी फुल रेजोल्यूशन में डिस्प्ले हो सकता है if we are connected to the TV through our phones. Also जो phones connected हैं इस TV से, they can directly send photos or videos to view directly on the TV even if people are outside their homes. And जैसे तुम्हारे पेरेंट्स अगर घर पे हों या कोई भी घर पे है and you want to send them photos or videos so that they can watch on TV, you can directly share that to the TV through your phones. जो U series 55 inch TV है वो 4 स्पीकर्स के साथ आता है and total gives a 30 watt output. एंड जो इसके स्पीकर्स है वो डाउन फेसिंग है, नॉट फ्रंट फेसिंग लाइक द Q1 सीरीज. Q1 सीरीज में हमें एक स्लाइडिंग बार देखने को मिलता था जिसमें स्पीकर्स यूज्ड टू गो डाउन एंड देन थ्रो द वॉल्यूम इन फ्रंट ऑफ द टीवी, सो दैट गिव अ really immersive sound experience. On the other hand, इस टीवी में डाउन फेसिंग स्पीकर्स हैं just like normal TVs, and 30 watt speakers are really good, but it's good for TV room experience. But अगर आपको इसको लिविंग रूम में लगाना है, I don't think that would be a really good option. का उतने भी लाउड नहीं होंगे इस पे स्पीकर्स, and I guess that is one of the just few places जहाँ पे ये Q1 सीरीज से थोड़ा पीछे है. Some other interesting features for this TV are like हमें रिमोट में ही माइक देखने को मिलता है जिससे हम गूगल असिस्टेंट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं एंड कैन सर्च फॉर मूवीज और व्हाटएवर. एंड वी ऑल्सो गेट अ किड्स मोड इन दिस. वी कैन सेट टाइम लिमिट फॉर किड्स, एंड क्या हम उनको एक्सेस प्रोवाइड करना चाहते हैं कि इन ऐप्स का, सो दैट दे कैन वॉच सर्टन ऐप्स ओनली, एंड वो कितने टाइम तक के लिए देख सकते हैं. Also the TV comes with a data saver mode जिसमें we can assign limited data on a certain network. Like these are the features जो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं and काफ़ी unnoticeable हैं but also make the TV really cool. But according to me the overall experience for OnePlus TV is really good. जो इनका software experience and interface होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा honestly, and the colors and the build will also stand out. The only complaint I have is जो इनके speakers होंगे won't be really that good but will be pretty sufficient. So all in all, I would suggest this TV to many people, and also I think I might also buy this TV sometime in future. And let me know in the comment section below whether you think you would be buying this TV or not. And also let me know in the comment section below what do you think about this TV. कि तुम्हें कोई specifications अगर इसमें कम लगते हैं या कोई और TV better features provide करता है. Do let me know in the comment section below. But that's been it from my side, and I hope you liked the video. If you did, be sure to smash that like button and also hit the subscribe button if you haven't already. And I'll see you in the next one.